Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be covering all the economy related current affairs for the month of June 2025 for the upcoming Cbse Direct Recruitment Quota Examination 2026. So the first topic is World Bank Poverty Line Revision. So the World Bank has revised the global poverty line from $2.15 per day to $3 per day. It is based on the updated price data and survey methods. Okay, so this is a very important news item. You also have to learn the base years. तो पहले जो था that was $2.15 per day at purchasing power parity of 2017. ठीक है, अभी वाला है $3 per day at the purchasing power parity of 2021. Okay, so try to remember this. This is very important fact. So $3 per day अगर हम इंडिया के टर्म्स में देखेंगे तो that will be 3 into 90 rupees approximately ले लेंगे तो 270 rupees per day. Anything below that you will be falling under the poverty line according to the World Bank. ठीक है, तो 270 rupees में तो आजकल एक डिश भी नहीं आती है वैसे. इफ़ यू गो टू एनी रेस्टोरेंट it usually crosses 300 rupees or so, है ना, but that is the metric which is being used here. ठीक है, नेक्स्ट है श्रीलंका's DFCC बैंक ग्रीन बॉन्ड्स ऑन NSE 9. So Sri Lanka's DFCC Bank PLC has become the first foreign corporate issuer to list green bonds on the NSE International Exchange at Gift City IFSC. ठीक है, IFSC stands for International Financial Services Center. It is in Gift City in Gujarat. ठीक है, near Ahmedabad. So this is a very important news item again. So Sri Lanka's DFCC बैंक, वहाँ का एक कोई DFCC बैंक है, तो उसके green bonds have been listed on National Stock Exchange, International Exchange. So that is what you need to remember. Sri Lanka का DFCC PLC बैंक के green bonds have been listed on that. Next, RBI new gold loan rules effective from 2026. ठीक है, so the RBI has released new draft rules for gold loans to address rising defaults and standardize the lending practices. So the norms come into effect from January 2026 to ensure proper implementation. ठीक है, तो ये बस this is not very important, बस new gold loan rules आए and that's all. Next, PayPal's cross-border payment aggregator approval. ठीक है, so PayPal, which is basically a payment gateway, the Indian subsidiary of PayPal Holdings, has received in principle approval for the Reserve Bank of India from the Reserve Bank of India to operate a cross-border payment aggregator. ठीक है, so now we'll be able to do cross-border payments using PayPal. ठीक है, next है Bajaj Alliance state-wise health insurance policy. Again, not very important, but just look at it once. Bajaj Alliance General Insurance has launched a health insurance product tailored to each Indian state and union territory called the State-Wise Health Insurance Policy. The plans are based on factors like local treatment costs, availability of healthcare infrastructure, and common medical conditions in each region. ठीक है, now Spree scheme relaunched in 2025. So ESIC का है ये. Recently, the Employees State Insurance Corporation approved the relaunch of the Spree scheme from July 1st to December 31st, 2025. So the scheme full form of this is the scheme to promote registration of employers or employees, and this was first introduced in 2016.
ठीक है। तो स्कीम का नाम क्या है? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़। इससे फ़ायदा क्या होगा रजिस्ट्रेशन करने से? Once a company is registered and their employees are registered as well, they come under the formal employment framework। ठीक है, ठीक है। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में दे स्टार्ट गेटिंग बेनिफिट्स लाइक प्रोविडेंट फंड एट्सेट्रा। ठीक है, सो दैट इज़ द मेन रीज़न वाई दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें सवाल क्या पूछेंगे? वो ये पूछेंगे कि किस इंस्टीट्यूशन का ये स्कीम है। सो दैट इज़ ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्कीम है ये। ठीक है, रिमेंबर दिस प्रॉपर्ली। ESIC की स्कीम है स्प्री। नेक्स्ट है RBI PSL targets for SFB, small finance banks, have been reduced. So, the Reserve Bank of India has reduced the priority sector lending targets for small finance banks from 75% to 60% to enhance lending flexibility and profitability. तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स क्या होते हैं बेसिकली? RBI है ना, एक रूल बना देता है कि दीज एटलीस्ट जैसे X% ऑफ योर लोन्स फॉर अ बैंक। जैसे आपके पास एक कोई भी बैंक है तो आप जो लोन्स डिसबर्स करेंगे उसमें से X% ऑफ द लोन्स शुड बी टू सम प्रायोरिटी सेक्टर। जैसे वुमेन को होना चाहिए 10% लोन्स। आपकी पूरी जो बैंक जितने भी लोन्स देंगे उसमें से एटलीस्ट 10% शुड बी फॉर वुमेन। ठीक है, ऐसे अज्यूम करिए। तो इसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा रहता है? यूजुअली द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी दे फॉल अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम। ठीक है, तो हर बैंक का डिफरेंट होता है। जैसे प्राइवेट बैंक्स और इनके लिए 40% होता है शायद। उसके बाद में जो रूरल बैंक 75% रहता है। तो ऐसे अलग अलग रहते हैं एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स आर ऑल्सो डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल वुमेन रहेगा, देन बैकवर्ड क्लासेस जो OBC वगैरह उनके लिए रहता है, देन रूरल एरियाज़ के लिए भी रहता है प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, तो इट इज़ क्लियरली डिफाइंड प्रॉपर्ली। तो अभी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं उनके लिए PSL पहले कितना था? 75%। सो 75% ऑफ देयर लोन्स हैड टू बी गिवन टू प्रायोरिटी सेक्टर्स, बट नाउ इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 60%। ठीक है। Next, so that is all for this video. Thank you. Please like, share and subscribe to my YouTube channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates.